Hello everyone, I would like to welcome you all to the introductory lecture of week 1 of our course Python programming. In this week we are going to study various topics and we will initialize with the installation of Python. If we are going to study any programming language, then firstly we should know how to install that particular platform on our system. Then setting up the environment for that. After that, studying about the interactive shell or working with the interactive shell of Python. Next, we will move towards the syntax of that particular language. जैसे ही हमें इंस्टॉलेशन प्रोसीजर का पता चल जाएगा कि हमने इंस्टॉल कैसे किया है, उसका एनवायरनमेंट सेट कर लिया है, तो हमें सिंटेक्स पता होने चाहिए उस लैंग्वेज के कि क्या हम उसमें कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम उसके आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं. और नेक्स्ट topic that is not that much important, but if we want to know about documentation, then it is one of the important one, like comments. अगर हमें कोई भी कोड लिखना है और कोई नया यूज़र हमारा कोड यूज़ कर रहा है तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम कमेंट्स की हेल्प से दे सकते हैं. सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीक. आफ्टर दैट, पाइथन डजंट हैव द कंसेप्ट ऑफ पेरेंथेसिस का इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है. तो अगर हमें कोई भी कोड का ब्लॉक हमें शो करना है या कोई लूप ब्लॉक शो करना है, तो इन सब के लिए वी रिक्वायर प्रॉपर इंडेंटेशन. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल टॉपिक इन पाइथन, इंडेंटेशन, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस वीक. आफ्टर दैट, क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट. अगर हमने कीवर्ड आइडेंटिफायर पढ़ लिए तो हम स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करें. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हेयर इज वेरिएबल्स. मीन्स हमने कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़नी है तो उसमें अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें अलॉन्ग विद इट्स डेटा टाइप. ऑल्दो पाइथन इज लूजली टाइप लैंग्वेज, बट इवन देन देयर इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप. सो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करें, किस तरीके से उनका स्टोरेज होगा मेमोरी में, ये सारी चीज़ें भी हम इसी वीक में पढ़ेंगे. The next topic is type conversion. If we have discussed about data types, then sometimes in the data we require the conversion of the types. Suppose we are inserting any variable in integer and we require it in float. So we need some kind of type conversion. Then after discussing variables and data types, we need to put any operator on that, or we have to perform any kind of operation on that. For that we require operators. And as like other languages, Python also support various operators that we will also discuss in this week. So if we want to summarize as a whole in this week, firstly we will discuss installation of Python, then setting up the environment and working with the interactive shell. Next we will discuss keywords and the creation of identifiers. The third one is comments, indentation and statement. Next, variable and data types. Next, type conversion. And last but not the least, its operator for this week. Then we will move forward in next week. Thank you.